प्रश्न 1। इस्लामी कानून की उत्पत्ति और विकास की व्याख्या करें। इस्लामी धर्म पूरी तरह से पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद ही विकसित हुआ, लेकिन विभिन्न चरणों में सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तनों ने इसमें काफ़ी बदलाव लाए। वर्तमान मुस्लिम कानून इसलिए अरब समाज में कई राजनीतिक और प्रशासनिक विकासों का परिणाम है। मुस्लिम कानून के ऐतिहासिक विकास को 5 अवधियों में विभाजित किया जा सकता है। पहली अवधि 622 टू 632, दूसरी अवधि 632 टू 661, तीसरी अवधि 661 टू 900, चौथी अवधि 900 टू 1924, पांचवी अवधि 1924 से अब तक। पहली अवधि 622 से 632। मुस्लिम कानून के विकास का पहला चरण 622 ईस्वी सन में शुरू होता है और पैगंबर की मृत्यु के साथ 632 ईस्वी सन में समाप्त होता है। इसे विधायी अवधि कहा जाता है। पैगंबर को 609 ईस्वी सन से ईश्वर अल्लाह के से दैवीय संदेश प्राप्त होने शुरू हुए। तब से वे इन संदेशों को मक्का के लोगों तक समय समय पर पहुंचाते थे। मक्का के लोग इन संदेशों और अल्लाह के बारे में पैगंबर द्वारा कही गई बातों पर विश्वास नहीं करते थे। पैगंबर मोहम्मद का पहला कार्य लोगों को इन संदेशों और एकमात्र ईश्वर अल्लाह के अस्तित्व में विश्वास दिलाना था। परिणाम स्वरूप इस दौरान अधिकांश रहस्योद्घाटन धार्मिक या आध्यात्मिक प्रकृति के थे और उनमें कोई सकारात्मक कानून नहीं था। 622 ईस्वी सन में पैगंबर मोहम्मद मदीना गए, जहां मक्का में प्राप्त ईश्वरीय संदेशों को आसानी से स्वीकार और पालन किया गया। मदीना में रहस्योद्घाटन में पैगंबर ने आम तौर पर लोगों के आचरण को नियंत्रित करने के सिद्धांत स्थापित किए, अर्थात सकारात्मक कानून। ये रहस्योद्घाटन समाज की हर समस्या का समाधान करते थे और ये पैगंबर की मृत्यु तक जारी रहा। अधिकांश कानून निर्माण संबंधी रहस्योद्घाटन 622 और 632 ईस्वी सन के बीच हुए। सकारात्मक कानून के नियमों को संग्रहित किया गया और पवित्र पुस्तक कुरान में शामिल किया गया। दूसरी अवधि 632 से 661। इस अवधि को इस्लाम के पहले 4 खलीफाओं की अवधि कहा जाता है। पैगंबर अपने समय में कानून और धर्म पर पूर्ण प्राधिकारी थे। वे आध्यात्मिक और प्रशासनिक रूप से मुस्लिम राज्य के प्रमुख थे। उनकी मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी का सवाल उठा। अधिकांश लोगों ने चुनाव का समर्थन किया और तदनुसार चुनाव हुए, जिसमें अबू बकर को चुना गया। इस तरह अबू बकर पहले खलीफा बने और मुस्लिम समुदाय का नेतृत्व किया। वे पैगंबर के जीवन काल में भी लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय थे। अबू बकर की मृत्यु 634 में हुई और उनके बाद उमर को दूसरे खलीफा के रूप में चुना गया। उमर 10 वर्षों तक प्रमुख रहे और 644 ईस्वी सन में उनकी हत्या कर दी गई। उनके बाद उस्मान तीसरे खलीफा बने, जिन्होंने 12 वर्षों तक समुदाय का नेतृत्व किया, लेकिन उनकी भी विरोधियों द्वारा हत्या कर दी गई। इसके बाद अली चौथे खलीफा बने। अली की भी 661 ईस्वी सन में हत्या कर दी गई। ये 4 खलीफा सही मार्गदर्शन करने वाले खलीफाए राशिदीन के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि उन्हें पैगंबर के निकट सहयोगी होने का विशेषाधिकार प्राप्त था। पैगंबर की मृत्यु के बाद दैवीय संदेश बिखरे हुए रूप में थे, कुछ केवल लोगों की स्मृतियों में थे। इस अवधि की विशिष्ट विशेषता ये थी कि सभी दैवीय संदेशों को विषयावार संग्रहित, व्यवस्थित और लिखित रूप में अंतिम आकार दिया गया। दैवीय संदेशों का ये संग्रह कुरान कहलाता है, जो मुसलमानों की पवित्र पुस्तक है। पहला संकलन जैद ने किया और तीसरे खलीफा उस्मान के समय में उन्होंने जैद से कुरान को फिर से संशोधित करने को कहा और पहले के संस्करण को नष्ट कर दिया गया।
हमें उपलब्ध कुरान का एकमात्र प्रामाणिक संस्करण उस्मान का संकलन है। इस अवधि की एक अन्य विशेषता ये थी कि पैगंबर की परंपराओं हदीस का सख्ती से पालन किया गया। इस चरण में कानून का एकमात्र स्रोत कुरान और पैगंबर की परंपराएं थी। तीसरी अवधि 661 से 900। अली को चौथा खलीफा नियुक्त किया गया और वे सही मार्गदर्शन वाले खलीफाओं में अंतिम थे। अली की मृत्यु के बाद उनके पुत्र हसन को खलीफा बनाया गया, लेकिन हसन अत्यंत धार्मिक और संत जैसे थे और प्रशासन में शामिल नहीं होना चाहते थे। उन्होंने स्वेच्छा से इस्तीफा दे दिया। उनके बाद मुआविया मुस्लिम दुनिया के अगले खलीफा बने, जिनसे उम्मयद वंश की शुरुआत हुई। उनके समय में दो घटनाएं हुई। पहली, खलीफा की राजधानी मदीना से दमिश्क स्थानांतरित कर दी गई और दूसरी, खलीफा का पद, जो पहले निर्वाचित था, वंशानुगत बना दिया गया। मुआविया के पुत्र यजीद को अगला खलीफा बनाया गया। हालांकि हसन ने प्रशासन में हिस्सा नहीं लिया। उनकी जहर देकर हत्या कर दी गई और बाद में हुसैन को करबला में मार दिया गया। उमैयद शासन के दौरान खलीफा का पद नियमित राजशाही बन गया और राजा साम्राज्य विस्तार में अधिक रुचि रखते थे, न कि कानून के विकास में। 750 ईस्वी सन में अब्बासिदों ने, जो पैगंबर के चाचा अब्बास के वंशज थे, उम्मयदों को हरा दिया और बगदाद को अपनी राजधानी बनाया। इनका भी कानून के विकास में ज़्यादा योगदान नहीं था। इस दौरान मक्का, मदीना और कूफा के विद्वानों ने कानून की व्याख्या का कार्य शुरू किया। व्यक्तिगत विद्वानों के अध्ययन से कई परस्पर विरोधी राय सामने आई। प्रत्येक विद्वान अपनी व्याख्या को सही मानता था। इन शैक्षिक मतभेदों ने सुन्नियों और शियाओं के बीच विभिन्न संप्रदायों को जन्म दिया। इस अवधि में केवल प्रामाणिक परंपराओं को कानून के रूप में स्वीकार किया गया। जहां कुरान या परंपराओं में कानून उपलब्ध नहीं था, वहां जुरिस्टों ने इजमा, सहमति और कियास अनुरूप तर्क के माध्यम से कानून को सैद्धांतिक विस्तार किया। दोनों विधियां समाज के लिए कानून खोजने के लिए उत्कृष्ट न्यायिक दृष्टिकोण साबित हुई। इस अवधि में समानता तर्क, सार्वजनिक कल्याण जैसे नए न्यायिक विज्ञान के सिद्धांत भी पेश किए गए। चौथी अवधि 900 से 1924। इस अवधि में अब्बासिदों ने 5 शताब्दियों तक शासन किया। 1258 ईस्वी सन में मंगोलों ने सुन्नी खलीफा को उखाड़ फेंका। कुछ समय तक सुन्नी समुदाय बिना किसी खलीफा के रहा। 1261 ईस्वी सन में अब्दुल कासिम को काहिरा में खलीफा बनाया गया। इस अवधि की विशेषता ये थी कि खलीफाओं के पास कोई प्रशासनिक शक्ति नहीं थी। 16वीं शताब्दी की शुरुआत में सलीम प्रथम को समुदाय का नेतृत्व करने के लिए आमंत्रित किया गया। इसके बाद खलीफा का पद ओटोमन्स को हस्तांतरित हो गया और कॉन्स्टेंटिनोपल दारुल खलीफा बन गया। बाद में 1922 में मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने तुर्की की सल्तनत को समाप्त कर दिया और 1924 में खलीफा का पद हमेशा के लिए समाप्त हो गया। मुस्लिम कानून के विकास के दृष्टिकोण से यह अवधि ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि इस चरण में कानून की व्याख्या रुक गई थी। इसके परिणाम स्वरूप पहले से स्थापित नियमों और तकलीद अनुकरण के सिद्धांत का पालन किया गया। इस सिद्धांत के तहत इस अवधि के विद्वानों ने महान जुरिस्टों की राय का पालन किया और इसमें कुछ भी नया नहीं जोड़ा। कुछ लोकप्रिय फतवे तैयार किए गए जो विद्वानों की राय थे। 5वीं अवधि 1924 से वर्तमान तक। 1924 में खलीफा के उन्मूलन के साथ इस्लामी कानून का आधुनिक काल शुरू हुआ। 1924 के बाद भी कोई खलीफा नहीं था जो धार्मिक प्रमुख के रूप में पारंपरिक इस्लामी कानून की जांच और कार्यान्वयन करता। इस्लामी कानून को धर्म से अलग कर दिया गया। मुस्लिम कानून को न्यायिक दृष्टिकोण से देखा जाने लगा। मुस्लिम कानून पर
ट्यूनीशिया और मिस्र जैसे आधुनिक इस्लामी देशों का प्रभाव पड़ा, जिन्होंने शरीयत के मूल चरित्र को संरक्षित रखते हुए वर्तमान समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप कानून को संहिताबद्ध करने की कोशिश की। एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता ये थी कि पारंपरिक इस्लामी कानून मानव आचरण के सभी पहलुओं को नियंत्रित करता था। भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना से पहले मुगलों ने मुस्लिम कानून को देश के कानून के रूप में लागू किया। ब्रिटिश शासन के बाद उन्होंने कई कानून बनाकर पूरी व्यवस्था को बदल दिया। Question 1. Explain the origin and development of Islamic law. Islamic religion developed completely only after the death of Prophet Muhammad, but the social and political changes at various stages brought about considerable changes. The present Muslim law is therefore the outcome of several political administrative developments in Arabian society. The historical development of Muslim law may be divided into 5 periods. The first period from 622 to 632. The second period from 632 to 661. The third period 661 to 900. The fourth period from 900 to 1924. The fifth period from 1924 till date. The first period from 622 to 632. The first stage in the development of Muslim law begins on the 622 AD and ends with the death of Prophet in 632 AD. This is called the legislative period. Prophet started to get the divine messages from God Allah from the 609 AD. Since then Prophet began to get divine messages, and these divine messages were being communicated to the people of Mecca from time to time, and those people did not believe in the messages of Allah given to them, and also disbelieved everything had he said about Allah to them. The first task of Prophet Muhammad was to make them believe in the messages and the existence of the only God Allah. The result of that, most of the revelations was of religious or spiritual in nature, and it did not contain any positive law. In 622 AD, Prophet Muhammad went to Medina, where the messages of God were already revealed at Mecca were very easily accepted and followed. In the revelations at Medina, Prophet generally laid the principles to regulate the conduct of the people, that is, the positive law. They had been revelations solving each and every problem of the society. This continued till the death of Prophet. Most of the law making revelations were made between 622 and 632 AD. Laying down rules of the positive law were collected and contained in the holy book called Quran. The second period from 632 to 661. This period was called the period of first 4 caliphs of Islam. Prophet during his time had been an absolute authority on law and religion. He was very spiritual as well as administrative head of the Muslim state. After his death, the question was about his successor. Majority of them favored election, and accordingly elections were held in which Abu Bakr was elected. Hence Abu Bakr became the first caliph and headed the community of Muslims. He was very popular among the people even during the life of Prophet. Abu Bakr died in 634, and after him Omar was elected as the second caliph. Omar was the chief for 10 years and was assassinated in 644 AD. After him Osman was the third caliph after elections. He headed the community for 12 years, but he was also assassinated by the
opponents, and Ali became the fourth caliph. Ali too was killed in 661 AD. The four caliphs are known as the rightly guided caliphs. They are also called as Khalfi-e-Rashidin because they have the privilege to be very close companions of Prophet. After the death of Prophet, the divine messages were in a scattered form. Some of them were only in the memories of the people. Distinguishable feature of this period is that all the divine messages were collected, arranged subject wise, and written to give a final shape. This collection of divine messages is called Quran, the holy book of Muslims. The first compilation was done by Zayd, and during the third caliph's time, that is Osman, he asked Zayd to once again revise the holy book, and the earlier version of Quran was destroyed. The only authentic version of Quran available to us is the Osman's compilation. Another feature of this period is that the traditions of Prophet were strictly followed. In this stage, the only source of law was the Quran and the traditions of Prophet. The third period, 661 to 900 AD. Ali was appointed the fourth caliph and was the last of the rightly guided caliphs. After death of Ali, Hussein's son was made the caliph. But Hussein, being very pious and like saint, did not want to involve himself into administration. He voluntarily resigned. After him, the Muawiyah became the next caliph of the Muslim world. From him started the Umayyad dynasty. During his time, two events took place. One is the seat of caliphate was shifted from Medina to Damascus, and secondly the office of caliph, which had been elevated, was made hereditary. Muawiyah's son Yazid was made the next caliph. Although Hassan, son of the Ali, was not involved in administration, was poisoned to death. Subsequently, Hussein was also killed at Karbala. During the rule of the Umayyads, caliphate became a regular kingship, and the kings were interested in capturing and expanding the empire than development of law. In 750 AD, the Umayyads were captured by the Abbasids, who were the descendants of the Prophet uncle Abbas, and made their capital as Baghdad. These two did not contribute much towards law. Further, the exposition of law was taken by the learned scholars of at Mecca and Medina and Kufa. The study of law by individual scholars brought lots of conflicting opinions. Each scholar began to claim his interpretation to be correct one. The academic differences gave birth to various sects among the Sunnis. Similarly, the Shias were divided into various sects. During this period only authoritative traditions were taken to be as law. Where law was not available in the text of Quran or the traditions, a theoretical expansion of law was undertaken by the jurists, Ijma, and the analogical deductions, Qiyas. Both the methods were found to be superb juristic approaches to finding of the law for the society. New concepts in the juristic sciences such as equity, reasoning, public welfare, etc. were also introduced during this period. Fourth period, 900 to 1924. In this period, the Abbasids ruled for 5 centuries
and the Sunni were overthrown by the Mongols in 1258 AD. For some time, the Sunni clan remained without any caliph. In 1261 AD, Abdul Qasim was made the caliph at Cairo. The feature of this period was that the caliphs did not have any administrative power. In the beginning of the 16th century, Salim first was invited to head the community. Therefore, the caliphate was passed to Ottomans and Constantinople became the Dar-ul Khalifa. Subsequently, the Sultanate of Turkey was abolished by Mustafa Kemal Ataturk in 1922 and the caliphate was abolished forever in the year 1924 AD. From the point of view of development of Muslim law, this period is not significant at all because at this stage further exposition of law had stopped. As a result of this, it was such that what was already laid down as rule of development of doctrine of taqlid, imitation. Under this doctrine, the opinions of the great jurists were followed by the scholars of this period without anything new to it. Some popular fatwas were formulated. They were opinions of the scholars. The fifth period 1924 to present days, within the abolition of the caliphate in 1924, began the modern period of Islamic law. This continued even after 1924. There was no caliph as a religious head to examine and execute the traditional law of Islam. The Islamic law was separated from the religion. The Muslim law was viewed judicially. Muslim law was largely influenced by the modern Islamic countries like Turkey, Tunisia and Egypt, etc. To codify the law in such manner that the inherent character of Shariat being preserved, the law is formulated according with the requirements of the present society. Another significant feature is that all aspects of human conduct were regulated by the traditional Islamic law. Before the establishment of the British rule in India, the Mughals applied Muslim law as the law of the land to all aspects. After the British, they changed all the system by enacting a number of statutes.